Good afternoon, everyone. Young India Charter 2024. The survey was taken over 56 universities throughout the country. Right now, we are facing serious threat, particularly in the education. In the name of national education policy, the present Modi government wants try to dismantle the common education system in our country. If we want to say in simple words, they want campus-less education in our country. That's what they are going to implement vigorously throughout the country in the name of national education policy. The exams, common entrance test for Central University and particularly the NEET for medical, we witnessed almost more than 60 students, they committed suicide because of NEET exam. Tamil Nadu is the first state we opposed the NEET exam in Tamil Nadu. Even 3 times unanimously passed a resolution against NEET in Tamil Nadu Assembly. But the union government, they does not respond for the Tamil Nadu Assembly's resolution. Even in Rajasthan also, in an institute, there are more than several students, they committed suicide because of NEET. So particularly this government wants the marginalized section, the oppressed section, the students doesn't allow to the higher education, particularly in the science background, because the science background only they are closely tied up with the power center bureaucrats. They are in the place to frame the laws for our country. So clearly they want the marginalized section students doesn't allow into the higher educational, in particularly in the science background. So we are continuously fighting against this new educational policy. If it is implemented completely, already most of the states, particularly BJP ruling states, they are implemented. Non-BJP states like Tamil Nadu, they are constitute a body to frame state education policy. After that, Karnataka, they also form a committee to frame state education policy. So we demand to roll back the NEET and CUTE and NEP, and also in this charter of demand for employment, the public sector, all the main issues facing by the young generation in our country, that are the demands placed before the students across the country. They answered for this question. So this is the true scenario in our country. So we seek the supports from all over the section in our country for this Young India Charter. Thank you. Already the charge sheet of the past 10 years of Modi government is published here. So for past 10 years the culprits are ruling our India. So it is the time for the punishment. So the upcoming 2024 election will be the punishment for this Modi government. The students of India will punish them. The entire Indian people will punish them. That we know that for past 10 years the entire education system of India is being manipulating by the Modi government. In education system we can say they are implementing commercialization, communalization and decentralization. Many of my friends had already told about that. So it's the duty of student to resist this. So for that we are organizing different campaigns there. On behalf of that, the Young India campaign is going on there. For past
9 years, the students is protesting against this draconian rule of thumb. So not only they are centralizing, they only are criminalizing or commercializing. They are not aware about the common students or the mind of the common people. They are implementing exclusion policy. They don't want to include all the oppressed, all the people, or all other students in the education system. Their entire perspective is the perspective of exclusion policy. So because of that, they are implementing the national education policy. It is entirely, when we are going through it, it is an 100% exclusion policy of education system of India. Not only in this case, they are rewriting the history of India. Now Mahatma Gandhi is now expelling from the education system, and the Godse is coming to our education system. They are saying Savarkar is the national hero of India, but Bhagat Singh is not. So in all aspects, they are manipulating the education system of India. They are working for the corporate and for the communal people, or for the RSS people. So it's our duty. There is a Chilean poem that it says that people united shall always be victorious. So we are interchanging that line. So even though the people is uniting against this Modi, draconian rule of Modi, the students of India is uniting against this draconian policy of the Modi government, of the RSS policy. So it will be victorious in coming days. Thank you. जैसे यहाँ पे हम सभी अलग अलग संगठन से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोग का एक क्लियर एजेंडा है कि हम लोग यहाँ पे एजुकेशन का जो इशू है उस पर इकट्ठा हुए हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारा क्या प्लान है और हम किन चीज़ों के साथ आए हैं, ये क्लियर बात करनी है। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे हम सभी अलग अलग संगठन से हैं, हमारा कोई कभी गठबंधन हो या ना हो, अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन इतना तय है कि कुछ मुद्दों पर एक साथ हैं। जैसे वो एक मुद्दा है शिक्षा का, जैसे हेफा जो आया है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एजुकेशन फंडिंग का पूरा जिम्मेदारी जो है यूनिवर्सिटियों को खुद डाल दिया गया उनके ऊपर। सरकार कहीं कहीं फंडिंग से पीछे हट रही है। दूसरी चीज़, जो JRF फेलोशिप हुआ करती थी, तो उसका नंबर पहले जितना था, अभी नंबर ऑफ फेलोशिप्स जो है वो कम कर दी है। उसके अलावा एक और फेलोशिप हुआ करती थी, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट्स को PhD के लिए मिलती थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है। तो यही सब मुख्य मुद्दे हैं। इन्हीं सब मुद्दों के साथ कि जैसे फंडिंग का एक इशू है, दूसरा बात ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की हालत बहुत जर्जर होती जा रही है। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हम देखें, जैसे मैं तो JNU यूनिवर्सिटी से आता हूँ, तो वहाँ जो हॉस्टल हैं, हॉस्टल के छत गिर रहे हैं, कहीं किसी विद्यार्थी के ऊपर बाथरूम का छत गिर गया और चोट लग गई, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। सड़कें खराब हैं, सड़क के किनारे रोड लाइट्स नहीं है, लेकिन जो खर्चा भी किया जा रहा है वो कार पार्किंग के लिए किया जा रहा है। ऐसा प्रोडक्टिव उसमें नहीं किया जा रहा है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स के काम आ सके। जैसे लाइब्रेरी में किताबें, JNU की बात करें तो वहाँ पे तो कई सालों से कोई किताब नहीं आई है, DU का भी लगभग ऐसा ही हाल होगा, तो सभी लाइब्रेरीज की भी हालत ऐसी है। तो कुल मिला के यंग इंडिया का आइडिया यही है। यंग इंडिया पे हम लोग इसी बात के साथ एक साथ आए हैं कि एक साझा संघर्ष किया जाएगा, जो देश के विश्वविद्यालयों या अन्य विद्यालयों या शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी सरकार अपने उससे पीछे हट रही है और सरकार छात्रों को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है, तो उसके खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश है, और ये संघर्ष इसी दिशा में रहेगा। धन्यवाद। पहले आप सभी को शुक्रिया, आप सब आए हो। मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ सभी साथियों को जो ग्राउंड पे जाके ये डेटा उठाने का काम किया। बहुत कठिन काम है, हम सभी को पता है, इतने ठंड में इस मौसम में उठाना। ज़्यादा बात नहीं रखेंगे, बहुत संक्षिप्त में कोशिश करेंगे रखने के लिए। NEP के बारे में बात हो चुका है ऑलरेडी, और एग्जिट पॉइंट के बारे में बात हो चुका है, डिप्लोमा के बारे में बात हो चुका है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डिप्लोमा क्या है, और जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो NEP है, जो बजट है, अगर आप देखोगे 2-3 चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं किए गए। हम लोग के पहले ही साथी बोल चुके हैं, हिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं किया गया, सोशियोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं हुआ, फिलोसफी के बारे में कोई बात ही नहीं हुआ। ये जो सारे सब्जेक्ट्स है, जिस सब्जेक्ट से पढ़ने से, इस सोशल साइंस को पढ़ने से हम लोग सवाल पूछते हैं सरकार से कि ये हो क्या रहा है देश में, इस सभी को आज बंद करने के तगाड़ पे है। यह सरकार कोशिश कर रहा है टू शट द होल सोशल साइंस सिस्टम।
और इसको ये चाहिए क्योंकि आज इसको यूनिवर्सिटी से मैन्युफैक्चर हुआ मजदूर चाहिए, एक मांसपिंड चाहिए जो सवाल ना पूछे सरकार से कि आज के समय पे क्या हो रहा है, हम लोगों का मुस्लिम भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, ये जो करप्शन है ये क्यों हो रहा है, ये सवाल ना पूछें। आज जो ये चार्टर लिया गया है, ये चार्टर सिर्फ एक चार्टर नहीं है। हम लोग ये चार्टर सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं, ये डिमांड है हम लोगों का। ये अभी हम लोग जो लड़ाई करेंगे उस लड़ाई का हम लोग का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि आज के समय जो कोशिश ये भाजपा सरकार करने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट कुछ साल से, इससे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सवाल ना पूछें। हम लोग इधर शायद सभी हम एकजुट होकर ये सवाल पूछेंगे कि हम लोगों का जो नेक्स्ट जनरेशन है उन सभी का शिक्षा सिक्योर हो। आज जो किसान ये दिल्ली पे आ रहे हैं उन सभी को सेफ्टी से उन लोगों का बात सुना जाए और हम सभी उन किसान आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। और इसी से मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट मूवमेंट को हर टाइम कभी भी कोई भी सत्ता में आते हैं तो डरते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट का जो नारा 1968 में लगाया गया था, बी रियलिस्टिक डिमांड द इम्पॉसिबल, हम लोग रियलिस्टिक है। अगर आपको लग रहा है कि मोदी सरकार को हटाया नहीं जा रहा, इतिहास उठा के देख लो, अगर वो हिटलर हो, अगर मुसोलिनी हो, अगर ये कोई भी हो जो फैसीवाद के संपर्क में थे, पहले साउंड उसके खिलाफ छात्र छात्री ने उठाया था, आज भी उठाएंगे, कल भी उठाएंगे। अगर आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है, हम लोग बोल रहे हैं इम्पॉसिबल नहीं है, ये रियलिटी है। देश के लिए, देश के हित के लिए मोदी को हटाना ज़रूरी है और हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं वी आर रियलिस्टिक। It may be impossible for you, but we demand the impossible. We will fight. We will win. Thank you, comrades. Good evening. Now it is almost going to wind up. As you all know that all the leaders talked about the same thing, so I don't want to say the same what they already mentioned here. One thing I can tell you, the people, the media people, that you should take these news outside very seriously. Because you know that our country is going in a very critical situation. Not only in the education sector, in all sectors, our country is facing a lot of issues. As you all know, the farmer issue, the unemployment, lot of issues are there. So I request on the behalf of this Young India movement, also on behalf of all the leaders who presented here, take out this news to everyone to know the reality of what India is, what happening really in India. Even though they are trying to saffronize the education sector, they are trying to politicize the education sector, everything they are going to make in their own way of action. So we need to find a real solution for this. As we know that in the freedom struggle, when with the students and the youth united, we fight against this imperialist force like that. This is a time for the youth and the students to come together. They should work together and fight against these fascist forces. I hope this very strong organization, all these present here, should come together and to raise their voice against this fascist force. Hope we can have a good results. And I request you all to kindly again and again to fight against this Afghanization, to fight against the injustice what is happening in India. Thanks a lot. Goodbye. हमारे सभी साथियों ने तो सारी बातें रख दी हैं, तो ज़्यादा चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये मौजूदा सरकार अभी चल रही है, जिन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारी जो योजनाएं थी उनको ख़त्म किया, और जो भी हमारे छात्र या युवा जो आंदोलन का हिस्सा बनना भी चाहते हैं उनको भी डराया जाता है। उनको ये बोल के डराया जाता है कि भाई आप आंदोलन में जाओगे तो आपके ऊपर FIR होगी, FIR हो जाएगी तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इस डर के मारे हमारे युवा छात्र लोग डर के मारे हमारे आंदोलन में भी नहीं आते। तो ये भी एक समस्या है। तो हमने अभी बहुत सारे संगठनों ने मिलकर एक निर्णय लिया है, जो मौजूदा सरकार है उसको हम ये चार्जशीट भेजेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और बाकी आप लोग मीडिया साथी लोग हैं, अब आप लोग अपनी बातें पूछना चाहते तो अब हम लोग अब रेडी हैं, आप पूछ सकते हैं।